वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जर्मनी से इस दफ़ा भी यूएस से बल्कि प्रोफेसर एमेरिटस असलम सैयद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम की अपने सारे सफ़र में भी इस प्रोग्राम की तवालत को टूटने नहीं दिया। आज सर, जैसा कि आपको और सब दोस्तों को ये हमने अर्ज़ किया था कि हम ये प्रोग्राम चाइनीज़ हिस्ट्री पे करेंगे। चाइना दुनिया का वो इलाका है जो मैं ये समझता हूँ कि तारीख में सबसे ज़्यादा ओवरलुक्ड, इग्नोर्ड है। यानी शायद दुनिया में बाकी मुल्कों में तो इससे ज़्यादा स्टडी किया जाता हो, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, कुछ अर्सा पहले तक हम चाइना के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। हालांकि हकीकत ये है कि दुनिया की कदीम तरीन तारीख में उसका जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। दुनिया के कदीम तरीन फ़लसफ़ा में उसका जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। और दुनिया के कहा यह जाता है कि वो दुनिया की पहली सुपर पावर थी। जब वेस्ट तारीकी में डूबा हुआ था, तब भी चाइना सिविलाइज्ड लाइफ गुजार रहा था और चाइना वाज मेकिंग वंडर्स। आज भी दुनिया का आबादी के लिहाज से तो सबसे बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। यानी आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 60,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पे फैला हुआ ये मुल्क, जो 14 मुल्कों के साथ जिसकी बाउंड्रीज लगती हैं, इतना बड़ा बॉर्डर, इतने ज़्यादा मुल्कों के साथ हमसायगी किसी और मुल्क की दुनिया में शायद नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर्स इसने पैदा किए। दुनिया की तारीख में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक बड़ा अजूबा जो है वो एक ही चीज़ है जो चांद पे जाके ज़मीन की नज़र आती है, और वो दीवार चीन है। ये चीनियों ने बनाई, और इस तरह के बहुत ज़्यादा वंडर्स हैं। यानी ये दुनिया की इब्तदाई महज़्ज़ब तरीन कौमों में से एक कौम है, और इनका ख्याल ये था कि ये दुनिया को बाकी दुनिया तो सारी है गैर महज़्ज़ब, लिहाजा जिस तरह से उन्होंने वाल किया अपने आप को, ऐसे ही मुझे लगता है कि वो ना चाइना से बाहर ज़्यादा निकले और ना चाइना में किसी को आने दिया। ज़्यादा तो इसकी तौजीहात की तरफ सर रोशनी डालेंगे। तो ऐसे इलाके को एक्सप्लोर करना जो हमारा मकसूद है, शायद अगले 10-12 सेशंस या जिस तरह से भी हमें मुनासिब लगेगा वो हम इस पे करेंगे। और आप दोस्तों से इल्तमास है कि प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए इसे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी शेयर करते जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई अपलोड होने वाली हर वीडियो उन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। और इसके साथ सर, आज सर ऐसा करते हैं कि तारीख में, जैसा मैंने अर्ज किया, कि मुझे ऐसा लगता है कि इसे बहुत कम परखा, पढ़ा और लिखा गया है। तो तारीख नवीसी के हवाले से सर, अगर मैं ये दरख्वास्त करूँगा आपसे कि थोड़ा रोशनी डालिएगा कि तारीख में चाइना पे क्या कुछ लिखा गया, चाइना को कैसे बताया गया। यानी वेस्ट तो हम तक वैसे पहुंचा जैसे वेस्ट ने बता दिया, चाइना दुनिया तक कैसे पहुंचा, दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में चाइना का रिकॉर्ड क्या है, और उसमें चाइना का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। सर, प्रोफेसर असलम सैयद साहब। बड़े थैंक यू। बड़े लोडेड क्वेश्चंस हैं आपके, एंड आई थिंक ईच वन ऑफ देम डिजर्व्स वन सेशन। पहले तो जो सवाल आता है जहन में वो आता है कि हाउ डू वी नो चाइना? जी सर। व्हाट आर द सोर्सेस जी सर। that tell us about China? Unfortunately, almost all of the sources that are available are not indigenous but foreign, except translations. One of my colleagues who is these days teaching in China, Roger Long, he has translated many of their old documents from original Chinese into English, and they provide us clue to their what we can call original sources. बाकी जहाँ तक इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है, it is mostly done by foreigners. पहला ये जहन में आप रखिए बात। और उन फॉरेनर्स में इस वक्त जो है वो अमेरिकन्स आर ऑन द टॉप,
फेयर बैंक की किताब से, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नेवर सेट अ फुट ऑन चाइना, बट हिज बुक बिकेम वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बुक ऑन चाइना अमंग स्टूडेंट्स। यही हमारे साथ हुआ इंडिया के साथ। जेम्स मिल नेवर केम टू इंडिया, बट हिज बुक बिकेम अ टेक्स्ट बुक फॉर मैनी स्टूडेंट्स, फॉर मैनी जनरेशंस। तो एक ये ज़हन में हमें रखनी चाहिए बात, यूरोसेंट्रिक आइडिया ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है, we being a former colony were also victim of that। और चाइना भी जब अंडर वेस्टर्न कंट्रोल था, मोस्टली ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, बल्कि लिटरली आई वुड एक्सटेंड इट टू द रेवोल्यूशन ऑफ माओ जेडुंग, वहां तक इट वाज dominated by West। So West tells us about China। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए। दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी अमेजिंगली ट्रू है, लेकिन एट द सेम टाइम कैन बी चैलेंज्ड आल्सो। वो ये है कि दे डिड नॉट लीव देयर बॉर्डर्स। Now, if you look at Chinese diaspora, there's hardly any country in the world where you don't have Chinese living. Not only that, you know, I when I would travel in Europe in different areas, or even in this country, almost every big city has a Chinatown. Whether it's San Francisco, New York, Los Angeles, or wherever you go, I mean, you will see a sizable Chinese population. The amazing part of that is that, except for a few, I had some Chinese students who were learning Chinese also. They said they were third, fourth generation. So mostly our parents keep us aware of our roots, but sometimes they don't. So we are relearning about our origins and about other things. सो चाइनीज कल्चर में दो तीन चीजें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी cuisine, which is known all over the world. Secondly, their style, their paintings, their philosophy, ethics. I think the towering contribution of China to world history, world thought is the ethics and connections between human beings. Now, today I am going to talk about, this was just a brief introduction, being the neighbors of China and boasting that we have very close and very good relations. I don't know how much of China we teach in our universities and colleges. Do we teach Chinese history? Do we teach Chinese culture? I understand we do teach Chinese language because of some job opportunities or things like that. Now, coming to the question of how to look at China. When I went through the literature, I found, three major schools. Fourth is Marxist school, and fifth is the what we call the traditional, looking at China through dynasties. उस पे I asked one of my colleagues, and she sent me, she said, you know, it's so difficult to teach students China that we have a song, a small song in which we repeat the dynasties. How many dynasties you can? So let me share that song with you. It goes like this: Shangzu Kinhan, Shangzu Kinhan, Sui Tang Song, Sui Tang Song, Yuan Ming King Republic, Yuan Ming King Republic, Mao Zedong, Mao Zedong। अब ये जो लाइनें हैं, ये एक्चुअली तो 4 लाइनें हैं, बट दे आर रिपीटेड। तो इसमें दे हैव mentioned all the dynasties that have ruled over China.
starting with Shang, फिर Zhu, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, King. Then it becomes in 1912 a republic. And as we know, in 1949, Mao Zedong declares it People's Republic of China. This is a very brief way of letting people know the width and breadth of China's uh, impact on the world. Now, if you ask me, sir, when did this history begin? It's amazing. It predates even Greek history. It predates many other civilizations. 2000 BC, we have some sort of records which we can use and reconstruct Chinese past. From that time onwards, up till now, there is a continuum. Many scholars believe that one thing that amazes us, that despite all these dynasties fighting and coming over, there is a continuity of political systems in China. The only part which ruled over, the only other non-Chinese people who ruled over, not just China, but it's equally claimed by Russia also and Central Asia also, were the Mongols, descendants of Genghis Khan. They ruled over. And later on, they were so much domesticated that it became difficult to distinguish whether they were Chinese or not. Another important feature of China to remember and to know is that when anything goes into China, वो एक है ना मिसल मशहूर, हर चीज दरकान नमक रफ्त नमक शुद्ध, वो चीज आप नमक की कान में डाल दें वो नमक बन जाती है. चाइना में कोई सिविलाइजेशन, कोई रिलीजन एंटर हुआ है तो उसने चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत लिया है. So much so that there was a time many people did not know that Buddhism started in India. They thought China is the home to Buddhism because Chinese, they, what should I say, shaped it to the tune of their culture so much that it became a separate entity. It could not be, you could not say that it is the similar that is followed in Sri Lanka and other Southeast Asian countries. It looked very different because it was soaked into Chinese culture. Same we can say, there are many ways of looking at Chinese history. I'm just going through very briefly different phases of looking at it. One is, as I told you, looking at what Kyoto School, this man wrote, he was a Japanese scholar, Naito. Uh, Let me see if I could find the name of his book. Actually, it is considered the first book. It is called On China. And in his language, it is Shinason. This book, he treats it like we do, ancient, medieval, modern. Now, Europeans had problem. Where does he put modern? When did China become modern? He puts it with the transition of Tang Dynasty, that is 9th century AD. I mean, between 800 and 1100, he says that China shows symptoms of a modern civilization, not just ancient, not just medieval. This the Western scholars did not like, and they said, no, it's not possible. At the most, you could start it from the 19th century when we entered China, because they thought that modernity of all kinds happens when
these people go into Asia or Africa or any part of the world, that's when they start becoming modern. So this is a heavily loaded value system which they portray in their textbooks also. But as I mentioned that, this man, Kyoto School's founder, he challenged that idea. And this was the first big nail that he really drew through this scholarship, coffin of scholarship, let me put it this way, of Western historians and historiographers. Second thing which amazes us is that despite, just going through very briefly over it, that if we look at their dynastic model from 2000 BC to 1600, you have many dynasties. Then comes Shang Dynasty from 1600 BC to 1050. Then you have five dynasties. This is period is called five dynasties from 10 to 220 CE, 10 BC to 220 CE, almost 200 years. That is followed by what we call six dynasties from 220 to 589. And then up to 1912, you again have six dynasties with, with an interruption, which is a very fascinating aspect of Chinese history, which is called five dynasties from, it was about 50 years, 907 to 960. And they were mostly fighting amongst themselves. Later on, they decided to uh, partition the area and to divide the empire, but then they were reunited by the later rulers, वो जो हमने six dynasties के other rulers की. Now, I will discuss with you. I very briefly mentioned Kyoto School's take on Chinese historiography. Now, I will discuss with you Jack Gannett's model of China. He is, yeah, ओरिजिन क्या होगा सर? मतलब ये किसी ट्राइब के नाम पे है या इसका कोई पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है क्या? कहाँ से सर ये लफ्ज आया चाइना? ये the word, I looked at it, the word Shina शीना is, they say that it is Yangtze, Yellow River नहीं है, if you know the geography. सर येलो रिवर का एरिया जो है दैट इज कॉल्ड शीना, उस वैली का नाम है. जी जी अगर आप देखें, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू मेक एनी कनेक्शंस, सर आपके नॉर्दर्न एरियाज में भी एक वैली को शीना वैली कहते हैं. शीना जी जी शीना जुबान पाकिस्तान की जुबानों में है सर. ये जुबानों में मिसी है एक. तो जी कुछ जी स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये वर्ड वही है. एंड दिस लेटर ऑन बिकेम चाइना. और फिर anything that came out of China was also called China. जैसे ये क्रॉकरी होती है, इसको भी इन्होंने चाइना कहना शुरू कर दिया. So there are many legends. To what extent they are true, we cannot verify. लेकिन नाम से यही लगता है कि ये येलो रिवर, जहाँ से ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन, ये एक्चुअली थ्योरी है एल्विन की थ्योरी, जिसकी तरफ सही हम बाद में बात करेंगे. तो सर अब आगे चलते हैं. और जी सर गैनेट गैनेट क्या कहता है? गैनेट कहता है कि एक बात आप ज़हन में रखें कि दिस इज मोर देन, इट्स ऑलमोस्ट नाउ 4000 years हिस्ट्री. अगर आप 2000 BC से शुरू करें तो नाउ वी आर इन 2023, to exactly 4023 years history. कहते हैं the amazing part is
Now, this we can take to other dimensions also. What is the amazing part? The amazing part is that despite the fact that many dynasties ruled over China, they fought amongst themselves also. But political systems did not change. Now, why? I had that question. Political systems should change normally. And that's where my interpretation comes, that political systems are mostly based on economic systems. What sort of economy existed? If the earlier political system did not change or did not do anything to the economy, naturally, economic system will lead to the same political system. This is still my take on China, despite the fact that it is becoming an industrial economy. I still see it as a permanent agricultural society. This is my view. It can be challenged, it can be questioned. I have no problem with that. But I feel when I look at the way Chinese political system is functioning, I look at it as purely, and we will come to that transition in a short while. So let's go back to this system. He says he looks at it from palaces, small palaces, which were owned by people who owned slaves. And this he gives them about 700 years, that from 1600 BC to 900 BC. Chinese history centered around who lived in palace and what they did. Out of this developed aristocracy, which would rule for the next 400 years. And amazingly, then you have army. Out of aristocracy, then you have army. So amazingly, army will come from 500 BC to 200 BC. And when you have army, then naturally it will lead to conquest. So they had new areas under them, and starting from this area, which is Mandarin, which is Yellow River Valley, then going all the way towards Yangtze River and all that area, this expansion takes place between 220 BC to 190 AD. This is his model. Then what happens, as it always happens, that military warlords, they themselves become rulers. And it's about 200 years that they rule different parts of China. Now, military rulers, they become aristocrats. This is this one, two, three, four, fifth phase. And when they become aristocrats, then they become autocrats also. And out of this autocracy, naturally divisions take place again from 755 to 1960. Then begins reunification from 970 to 1280. All those divisions are done away with. And this is where Kyoto School is absolutely right, that this is from where you can start tracing history of modern China, not medieval, modern China, because the idea of reunification and the idea of aligning different institutions together, it happens during this period.
Now, this reunification yields to permanent agriculture. We will look at the Alvin model later on. If there is any question or if you think I'm not stating it clearly, please interrupt me so नहीं that नहीं, I can explain it. इट्स रियली फाइन सर. मतलब अगर हम, जैसे आपने बताया कि एंशियंट और इसे मुख्तलिफ पीरियड्स में जो तकसीम किया गया है, जी यानी कि इम्पीरियल और मॉडर्न, अगर सर मतलब ये कहाँ हम एंशियंट को इम्पीरियल में, जैसे आपने मुख्तलिफ डायनेस्टीज का जिक्र किया, जी मतलब ये कि जरा एंशियंट हिस्टोरियंस जो हैं चाइना के, उनका तो थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा, और फिर ये जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी इनका सर जरा. हाँ, इनकी हिस्ट्री जो है ना वो अगेन इट इज written by foreigners. ऑलराइट सर. They have used, for example, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे because that man deserves at least one session. Confucius. जी सर. मुझे हैरत हुई इस बात से कि हम अक्सर हिस्टोरियोग्राफी शुरू करते हैं हेरोडोटस से, ग्रीक से. जी सर. Whereas अगर आप हिस्ट्री राइटिंग देखें तो it begins in China long before we could say that it started in Greece. जी सर. लेकिन वो कुछ हिस्टोरियंस ने उसको जस्टिफाई किया है कि the way we understand history today as not just narration of what happened, but looking for causes and sequence and one cause leading to another. There, Herodotus stands out than all the other Chinese. These dynasties were actually, these were tribes of, old system was that people were known by an elder of tribe. So a Shang will give the name of uh, his parents or his ancestors to the tribe. Now, in these dynasties, the pattern was more or less the same if you know the Mongol history. Huge areas of pasture land. They had horses, they had other animals, cattle, and whosoever controlled that controlled the area. There was no, at least in this period of dynastic problems, which we have 5 dynasties and 6 dynasties. Incidentally, there is a small history that Confucius also wrote about the area, local history of his own area. He also wrote, and which has survived. It's quite interesting to see the way he looks at it. So these were different tribes, and because of topography of China, they were concentrating on those areas where they could have easy access. So ये जो we were talking about 5 or 6 dynasties, इनमें we can come back to that later on also in detail. They controlled those areas सर. where they could easily manage the affairs. बिल्कुल ठीक. और पेजेंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जिस्ट नहीं करती थी उस वक्त उस सेंस में. सो दे डिपेंडेड ऑन व्हाट वी कॉल स्लेव्स. ये बाद में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इसको और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उस पर भी हम एक छोटी सी, आज मैं सिर्फ इसको आपको ब्रीफली बता रहा हूँ. जी बिल्कुल ठीक सर. किन पैटर्न से वी कैन अंडरस्टैंड चाइनीज हिस्ट्री. बिल्कुल ठीक सर. अच्छा, अब फॉरेनर्स आते हैं, ओपन डोर पॉलिसी जिसको चाइना में कही जाती है. व्हाट अट्रैक्ट्स देम टू चाइना? वही परमानेंट एग्रीकल्चर. To sell things to China, to get raw material from China, to explore China. उसके साथ फिर ये जो आपके मिशनरीज होते हैं उनका आइडिया था टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन चाइना. ये सब इतना कुछ मिंगल हुआ कि 19th century became really
क्रूशल फॉर चाइना। इन्होंने फिर ये सो कॉल्ड रिपब्लिक बनाई और यू नो द हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक 1912 से लेके 1949 तक, हाउ देन दैट वाज एक्सपोर्टेड टू ताइवान और फिर माओ का रेवोल्यूशन और 1949 से बाद की हिस्ट्री स्मूथ नहीं है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री वी स्टार्ट, मॉडर्न आई मीन कंटेम्परेरी हिस्ट्री, वी डोंट स्टार्ट विद माओ, वी स्टार्ट विद डेंग ज़ियाओपिंग। ये हमारा सिस्टम है इस वक्त। अब मैं आता हूँ आपको दूसरे, जो मेरे नज़दीक इससे गैनेट से ज़्यादा मुझे वो सूटेबल लगती है टू अंडरस्टैंड चाइना। ये है एल्विन का मॉडल, जेकब एल्विन का मॉडल है ये। He starts from Yellow River Valley. That was a fertile valley. और उसकी अगली स्टेज आ जाती है फिर परमानेंट एग्रीकल्चर। स्टेट ने फिर सोचा कि दिस शुड बी सुपरवाइज्ड, और सुपरविजन में फिर क्या किया, स्टेट ने लैंड होल्डिंग शुरू कर दी। स्लाइटली मार्क्सिस्ट है, लेकिन बिल्कुल प्योरली मार्क्सिस्ट नहीं है ये अप्रोच इसकी। इट इज ट्रू कि आप कैसे लोगों से लगान वसूल करते हैं। लोगों को कहते हैं कि ज़मीन तो हुकूमत की है, आपको हमने पट्टे पे दी है या आपको दी है, तो उसके एवज़ आप ये हमें पे करेंगे। तो वो ये कहता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनीज़ सिविलाइज़ेशन बिगिन्स इन येलो रिवर वैली, where this permanent agriculture leads to state holding of land, और उससे फिर इसकी एक्सपेंशन करते हैं वो यंगसी वैली में। When they look at the dividends, then they realize that it's very important to expand it. अब उसकी एक्सपेंशन के बाद दो मसले आते हैं, बल्कि तीन मसले, और दैट्स द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी कैन कॉल मॉडर्न चाइना। पहले तो ये वाटर सप्लाई का क्या किया जाए, रिवर्स डोंट फ्लो एवरीवेयर, तो वाटर सप्लाई स्टेट ने खुद अपने जिम्मे ले ली। दूसरी चीज थी ट्रांसपोर्टेशन, हाउ टू ट्रांसपोर्ट agricultural goods from one place to the other. That was also the responsibility of the state. और उसी की प्रॉब्लम्स पे, वो पता नहीं आपने नॉवल पढ़ा या नहीं, द गुड अर्थ, पर्ल बक का ब्यूटीफुल नॉवल है वो उसी पे लिखी थी कि डिस्पाइट ऑल दिस प्रोड्यूस, कई इलाकों में नहीं पहुंचती थी एग्रीकल्चरल गुड्स, जिसका रिजल्ट होती थी स्टारवेशन और जो प्रॉब्लम्स फैमिन की तरह की होती हैं। उसके साथ ये एल्विन कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ मनी, यानी करेंसी भी जिसको आज हम यूज करते हैं, इट स्टार्टेड इन चाइना, नॉट इन द वेस्ट द वे वी अंडरस्टैंड इट। दैट डेवलप्ड, और ये फिर लीड्स टू कैपिटलिज्म। Big landholders, big brokers in the cities who exploited the peasants, who could buy land, who could buy produce while it was still in the fields. This started, and the last phase, he says that then there was a revolt against it, and socialism happened. अब आप मुझसे पूछेंगे कि आजकल कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है सर चाइना में? जी सर, इससे पहले सर अगर आपने एक मेंशन किया था सर बुद्धिज्म का, उसकी यहाँ पे काफी ग्रोथ हुई। हाँ, तो एक सवाल ये आता है सर कि वो बुद्धिज्म इतनी तेजी से चाइना में फैला, वहां से पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन चाइना से फिर ये निकल गया, इसका सर क्या? हाँ, वही ना, मैं वही बताता हूँ आपको। निकला नहीं, चाइना ने हुआ क्या सर यहाँ पे आता है वो बंदा जो
उसको समझ जाएं तो चाइना सारा समझ आएगा, दैट इज कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस, ठीक हुआ सर। अच्छा, वेन एवर यू हैव एन आइडिया, मैं सर। आपको दूसरी मिसाल ईरान की देता हूं। सर। ईरान क्यों मुसलमान हुआ? हम्म। क्योंकि ईरानियों को तो ये अरब मुसलमान नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि इनको खराज मिलता था, इनको बहुत पैसे मिलते थे। हम्म। और ईरानियों ने देखा कि ये तो सिमिलर है हम्म। व्हाट वी हैड। हमने दो खुदा बना दिए थे, इनका खुदा तो एक ही है, बट देयर इज एन एजेंट ऑफ इविल अलोंग विद दैट। तो ये वाहिद डाइग्रेशन है, लेकिन इससे आपको समझ आ जाएगी चाइनीज बुद्धिज्म की कि ये वाहिद जुबान है जिसमें जितने हमारे अरकान हैं उनके लिए उनके पास अपने अल्फाज हैं। हाँ, पैगंबर है, सौम की बजाय रोजा है, सलात की बजाय नमाज है, जहन्नुम की साथ दोज़ख है, जन्नत के साथ बहिश्त है। आई मीन जितने आप देख लें, वो तमाम आइडियाज़ आपको अल्लाह के लिए खुदा है उनके पास लफ़्ज़। तो ये तमाम चीज़ें जब मौजूद हों, तो फिर आपके लिए आसान होता है ट्रांज़िशन। बुद्धिज़्म जब गया है चाइना में, तो बड़ी रेज़िस्टेंस हुई है शुरू में। जो मुतवल्ली थे, बल्कि इसकी 4 फ़ेज़ेज़ हैं। जो बुद्धिज़्म के हिस्टोरियन हैं, उन्होंने 4 फ़ेज़ेज़ बताई हैं। एक फ़ेज़ तो ये थी कि रेज़िस्टेंस हुई, तो फिर इनको खिलाफ काफ़ी कुछ किया गया, फिर देन दे वेंट अंडरग्राउंड, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बुद्धिस्ट जो थे स्कॉलर्स, दे लर्न्ड चाइनीज़, they presented same ideas of Buddha wrapped in their own language and culture. वो उनको फिर सिमिलर लगे, और वो फिर ऐसे सिमिलर लगे दैट दे अडॉप्टेड इट। उसके बाद उन्होंने सोचा, फिर देन एज यू आर राइट कि यहीं से फिर बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला, बल्कि वेस्ट को भी अट्रैक्ट जिस बुद्धिज्म ने किया है, इट वाज नॉट सो मच श्रीलंकन और इंडियन, इट वाज चाइनीज बुद्धिज्म। हाँ, तो इट केम थ्रू दैट पार्ट। जिस तरह से साउथ एशिया के आगे आई मीन वेस्टर्न ईस्टर्न इस्लाम, ये भी आप ज़हन में रखिए, किसी वक़्त इस पे भी बात हम कर सकते हैं। कि बगदाद में आप खड़े होके ईस्ट और वेस्ट को देखें। वेस्ट का अरबी इस्लाम है, ईस्ट का फ़ारसी इस्लाम है, और फ़ारसी इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ है अरबी इस्लाम से, कल्चरली बड़ा रिच है, डाइवर्स है। इसी तरह आपको नज़र आएगा कि चाइनीज़ बुद्धिज़्म जो है, इट इज़ सोक्ड इन चाइनीज़ कल्चर, क्योंकि इंडिया ने तो इसको निकाल दिया था। उस वक़्त पाकिस्तान में ये लोग आए, जो एरिया इस वक़्त पाकिस्तान है, और एक्चुअली वहीं से हमें ये लिंक्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलते हैं कि दीज़ वर द रूट्स ऑफ these pilgrims, these holy men going. Actually, it was the territory of today's Pakistan, नॉर्थ और साउथ दोनों जगह। क्योंकि हिंदुइज्म का जो सिस्टम था कास्ट का, वो इतना स्ट्रांग था दैट इट कुड नॉट टॉलरेट a liberal and open society that was advocated by Buddhism. तो it had to be elbowed out, उन्होंने इनको निकाल दिया बाहर। लेकिन ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से जितना आपको बुद्धिज्म नजर आएगा साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, दैट केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड श्रीलंका, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। इसी तरह बर्मा में 2 स्ट्रीक्स आपको नजर आएंगी बुद्धिज्म की। एक कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, जो चाइना से हैं, दूसरी कमिंग फ्रॉम द सी, फ्रॉम द ओशन, और नेबरिंग एरियाज जो हैं बंगाल के और श्रीलंका के। तो ये एक तरह से सर्कल है जिसमें इंडिया रिमेन्स एज अ ब्लॉक, बुद्धिज्म इसके इर्द गिर्द डिवेल्प होता है।
Going back to your question, when Buddhism became so much soaked in Chinese culture, then it became something quite different. Not so much in teachings, but in its approach towards life. अब आप कहेंगे कि फिर निकाला क्यों गया? हम्म When people saw कि ये तो वही है जो कन्फ्यूशियस कहता था, तो डुप्लीकेट हम क्यों रखें फिर? ठीक है ना, जब आपको नजर आ जाए कि यार ये तो वही बातें कर रहा है। बुद्धा की आप एथिक्स देखें और कन्फ्यूशियस की एथिक्स देखें, बुद्धा ने तो हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है दैट ही लेफ्ट एनी रिटन थिंग, लेकिन कन्फ्यूशियस की तो राइटिंग्स हैं मौजूद। वो लोग कहते हैं कि कुछ ने बाद में उनमें ऐड किया, बट स्टिल दे आर देयर। इसलिए ये आप ज़हन में रखें बात कि चीनी बेशक कम्युनिस्ट हो जाएँ, बेशक बुद्धिस्ट हो जाएँ, बेशक मुसलमान हो जाएँ सारे, कन्फ्यूशियस को नहीं छोड़ेंगे ये। क्योंकि वो ऐसा फिट होता है हर जगह कि आपको हैरत होगी उस शख्स की अ, दूरंदेशी से, आप कह लें उसको, कि उसकी बातें आज भी सही है। अगर आप पढ़ें उसके जो उसने लेसन्स दिए हैं ऑन पॉलिटिक्स, ऑन एथिक्स, ऑन इकोनॉमी, ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट ही लेफ्ट समथिंग। तो यू विल बी अमेज्ड कि वो कितने अपडेटेड और मॉडर्न हैं। ये एक वजह मुझे नज़र आती है आपके सवाल के जवाब में। ठीक है? अब हम आगे बढ़ें? अच्छा, अब अगला इस मरहले में ये आता है कि वो तो हमने डिस्कस कर लिया, कैपिटलिज्म एंड देन सोशलिज्म। अच्छा अब हम वी वर लुकिंग एट द क्वेश्चन कि ऑफिशियली चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन-सी, या मेरे पास जो इसकी अ, इसका जो सबूत है, आप पूछेंगे कि हाउ डू यू नो क्या पढ़ाया जाता है? हम्म ज़ाहिर है मैंने कोई ऐसे मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशंस हैं, टेक्स्ट बुक्स व्हिच आर टॉट टू स्टूडेंट्स इन चाइना, और उसमें से मैं आपको बताता हूँ कि नाउ दे आर टीचिंग मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ चाइनीज़ हिस्ट्री। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये हमें याद रखनी चाहिए, फिर आपको नज़र आएगी हाउ मॉडर्न दिस आइडिया इज़। हम्म व्हाट इज़ नेशनलिज्म? पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म ये है कि आवर बॉर्डर्स आर सो सेक्रेड that we have to defend them at every cost. This is not what Chinese teach. They say we lose and gain territories in history. Empires change, they break. Sometimes we are smaller in size, sometimes we are bigger in size. Sometimes we are united, sometimes we are not. ये पूरी अपनी जितनी उनकी हिस्ट्री है, उसको उन्होंने सम अप किया है इनटू थॉट्स, so that people would be asking question. This is a very wise thing to do. What about Taiwan? They are Chinese. Why are they not with us? और हांगकांग जब इसका पार्ट नहीं था, many other areas, कुछ और हैं, एक दो एरियाज which are still not part of China. तो उन्होंने प्रिपेयर किया है इन यंग माइंड्स को कि दिस हैपेंस इन हिस्ट्री, और उसकी वो इलस्ट्रेशन देते हैं ऑफ देयर ओन हिस्ट्री, who we were, where we started, and how we expanded, then how we decreased in size, और इस वक्त हम कैसे पहुंचे और क्या हुआ। तो if in future something happens, these borders are not sacred in this part of historical lessons.
They could change, and as they have changed in the past, they could change in future also. पहली बात तो ये ज़हन में रखिए आपके ये। दूसरी बात, how do they look at history? The earlier period, they look as the period of slavery. They don't go to the palaces, they don't go to the kings. They see where is the most of the population and what is their status. उसमें उनको सिवाय चंद एक लोगों के अक्सर तो स्लेव ही नज़र आते हैं ना। So this is called age of slavery. अच्छा, उसके बाद amazingly there are two stages of feudalism. पहला feudalism है which is normal Marxist feudalism, जिसमें पैलेस या कोर्ट्स या किंग्स जो हैं वो आपको ग्रांट देते हैं लैंड की। You are not accountable to anyone else, neither is king. So there is some sort of bond between the ruler and the feudal lord, और जो भी प्रोड्यूस होती है वो it is at your disposal. If you want to share it with the peasants, okay, otherwise you are not obliged to do that. अब वो कहता है कि जो थर्ड फेज है वो है कि दिस फ्यूडलिज्म बिकम्स ब्यूरोक्रेटिक। ये मैंने पहली दफा देखी है ये टर्म यूज करते हुए, बट ब्यूटीफुली डन। कि feudal, if it is feudal, is dependent only on the ruler. Rulers change, and then there is a possibility of changing economic system also. But if feudals also become bureaucrats, it means they administer, whether it's irrigation or it's revenue collection or rules and regulations about cultivation. They become, so this third phase is feudal bureaucracy, and of course, fourth phase is pure and simple bureaucratic control, and out of that bureaucratic control comes Western intervention, and you have a capitalist class. That capitalist class is protected and promoted by the Western powers, who are in a position to execute changes, who are in a position to favor or oppose somebody, और फिर फाइनली आपकी स्टेज आ जाती है ऑफ सोशलिज्म। ये तमाम फेजेस में से जब आप गुजर रहे हैं तो सवाल जो मेरे ज़हन में आया, इन्होंने तो नहीं पूछा सवाल जो स्कॉलर्स में पूछ रहे थे, कि हमें कार्ल मार्क्स ये बताता है कि विद द चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, social norms and ethical system also changes. है ना ये? What happened to China? Did it change? No. No. Yeah. This is an exception which I wanted to point out. Whether we are talking about first phase, second, third or fourth, वो जो एक system है, whether you practice or not, that is there. And that system sustains the social fabric of this society. बड़े मारे हैं माओ ने लोग, तो पहले भी बड़े मरे हैं, अब भी सुना है बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि क्यों एक लार्ज स्केल, इन्होंने कोशिश की है अमेरिकन्स ने बड़ी, टाइनमेन स्क्वायर की आपको याद होगी वो, क्यों नहीं एक ऐसी बात होती जिससे कि आपको कुछ नजर आए। कहते थे कि कैपिटल क्लास
आ जाएगी फिर हो जाएगा, कुछ नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नॉट जस्ट कंटिन्यूटी ऑफ दैट पॉलिटिकल सिस्टम, जिसकी गैनेट बात कर रहा था, बल्कि कंटिन्यूटी ऑफ दैट social norms and ethical system that was given by Confucius. So that's how the way I could be wrong. I'm not saying that it could be just my notion, but sir. I think Confucius is still alive in China, Oh, yes, sir. and the path that he gave to the Chinese people is still visible. And whenever they look at the changes that are taking place in terms of their uh, reacting to international events, I don't know if you have noticed or not. I'm sure many people have noticed it. Yes, sir. Their reaction is never emotional, never sentimental. It's very calculated. I mean, at least there should be one or two politicians in that country who could burst out and say something which is like Americans or Europeans or Pakistanis or Indians do, but they don't. Why? It's that. और उसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी इनकी एथिक्स इन बैटलफील्ड्स, इनकी एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी एथिक्स इन हैविंग रिलेशनशिप विद अदर कम्युनिटीज। वो मार्वलस है। एंड I don't know, I haven't interacted with many Chinese, but जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उनमें I have felt, even when they are not mentioning Confucius or anyone else like that, but they still maintain those values that I think are enshrined in his ideas. So this is how I feel about China. So going back, summing up to the idea of historiography of China, unfortunately, unless we know Chinese and we can read what the Chinese are writing in their own language, we have to depend on either translations or we have to depend on the way it is being interpreted by different scholars in the West. मैंने आपको आज बड़ा ब्रीफली, बहुत ब्रीफली 5 स्कूल बताए हैं ऑफ चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी: कियोटो स्कूल, कैब्रेट स्कूल, एल्विन स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल जो होता है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का. You can perhaps identify some more also if we go through how the Chinese are looking at themselves. It is possible. So this is how I feel. We can then discuss how to go about in our future discourse on Chinese historiography. जी. इंपीरियल पावर्स ने, मुख्तलिफ कॉलोनियल पावर्स ने, जो हम पे भी हमलावर होती रही, उन्होंने चाइना से काट के कोई हाँ. 22-23 इलाके हैं जो चाइना से काट दिए गए, और कोरिया मतलब उसमें और ऐसे इलाके हैं जिनको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डिस्कस कर लेंगे जब हम मॉडर्न चाइना पे आएंगे. जी जी. क्लासिकल में सर कुछ 1-2 क्वेश्चंस इरम गुल साहिबा के थे जो आपने एक का तो एड्रेस कर दिया, बाकी बुद्धिज्म के हवाले से उसे अगले में ले जाएंगे. अभी आखिरी क्वेश्चन एक उठा लेते हैं सर, शबनम यूसुफ साहब का, साहिबा का है. ये कहती हैं कि व्हाट वाज द साइकी ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंपीरियल्स who constructed 22,000 kilometers long Great Wall of China in 2,000 years. Time passed, but the strategy to build infrastructure was not changed. Why? जी, this was actually a defensive wall.
सर ये कोई आजकल तो वो है ना टूरिज्म की, उस वक़्त ये था कि होर्ड्स कुड कम इनटू, अगर आप सर इसका पूरी ज्योग्राफी देखें ना, इट जी सर। प्रोटेक्ट्स द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ चाइना फ्रॉम हम्म होर्ड्स। देखो, जो ज़राअत होती है ना, आपकी सस्टेन करती है, जो आपको द मोस्ट वैल्यूएबल पोज़ेशन यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर्स। हम्म आप रिवर पे कब्ज़ा कर लें तो आपके एग्रीकल्चर पे असर होगा। आप अगर वैलीज़ पे आके कब्ज़ा कर लें, फ़ील्ड्स पे हम्म आके कब्ज़ा कर लें, तो ये जो वॉल बनी है, पहली बात तो ये इन्होंने सही कहा है, ये एक दफ़ा नहीं बनी, ये इन हम्म डिफरेंट पीसेस बनी है और हम्म बहुत इस पे टाइम लगा है। हम्म इसका मकसद ही वो था कि चाइना को प्रोटेक्ट किया जाए, उस इलाके को ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट किया जाए, व्हिच वाज़ प्रोड्यूसिंग द सोर्सेज़ ऑफ सस्टेनेंस फॉर चाइना, और वो क्रूशियल था फॉर द डिफेंस ऑफ चाइना। ये सारी वॉल आपको, और इसको बड़ा ये अ, बहुत जेलसली गार्ड करते थे। तो ये जितने, अगर आपने कभी गए हैं, वो देखिए अगर आपने वो, तो वो जितने आपको नज़र आएँगे बने हुए वहाँ पे वॉच टॉवर्स, दैट वाज़ द आइडिया कि आप दूर से देख लेंगे और उसकी ऊँचाई पे देखें आप, यानी किलों में भी ये वॉच टावर बनाते थे। ये दिस वाज़ समथिंग, चाइनीज़ ने ये नई एक चीज़ बनाई कि वो किले में तो आप बंद होके बैठ गए तो कौन है किले में? रूलर ही है ना, रूलिंग डायनेस्टी है। व्हाट अबाउट द पीपल हू आर रिस्पांसिबल फॉर योर सस्टेनेंस? उनका क्या होगा? वो मारे गए बेचारे, आ गए, उनको ले गए, उठा के ले लूट गए, ले गए। आप रहे अपने सलामत अपने किले में। तो ये क्रेडिट गोज़ टू, आई लुक एट इट डिफरेंटली। इन्होंने पूरे चाइना को किले की तरह बना दिया कि वी विल नॉट प्रोटेक्ट ओनली आवर बैकयार्ड, हम, जो हमारे लोग हमारे लिए काम करते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसको आप किले की वॉल की तरह देखिए, उसको एक्सपैंड कर दें सिर्फ आप, देन यू विल अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ चाइनीज रूलर्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सर बहुत नवाजिश। और दोस्तों जिस तरह से ये बहस आगे चल रही है, चूंकि चाइना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है जिसे अनफोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इस हवाले से भी हो सकता है कि देखें चाइना भी कॉलोनियल पावर्स के निशाने पे रहा और ये अफ्यूज़दा रहा, बड़ी सोशल ईवल्स में रहा। चाइना की क्वीन को भी उन्होंने ऐसे रखा कुछ अरसा, जी। ब्रिटिश ने, जैसे हमारा बहादुर शाह जफर था, किले के अंदर तक महदूद महदूद हो गई उनकी क्वीन। लेकिन दे बेसिकली प्रूव देमसेल्फ टू बी रेजिलिएंट। उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने इतनी तेजी से, जैसे उस वक्त तो उन्होंने वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, अब वो समुद्रों में रास्ते बना रहे हैं, पूरी दुनिया में तजारती शाहराहें बना रहे हैं, पूरी दुनिया पे द मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है चाइना की। और ये देखें कहाँ तक ये सफ़र जाता है। इस सफ़र को जानने के लिए आप हमारे अगले प्रोग्राम और उन के साथ हमारे साथ रहें ताकि हम इसे आगे की तरफ लेके चल सकें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अनटच्ड एरिया को बड़े खूबसूरत अंदाज में अनफोल्ड किया और अगले प्रोग्राम्स में हम इसे मज़ीद अनफोल्ड करते जाएंगे और आप दोस्तों के तावन से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। खुश रहें, खुश रखें और इल्म की शमा को जहाँ तक हो सके फैलाते जाएं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सर खुदा हाफिज़।